Good morning, my dear student. I welcome you in this very special lecture series of statistical thermodynamics. And I also welcome you. Of course, it is a new session of second semester. You are all very dedicated student of this School of Studies in Chemistry. And in continuation of my series of lecture on statistical thermodynamics, today I am planning to derive one of the most important aspects of your physical chemistry course, that is Bose-Einstein statistics. I think it comes under the heading of chemical thermodynamics, and in my previous lectures I have already derived the fundamental concepts of statistical thermodynamics. I will not repeat all those fundamental concepts, and fortunately I have also discussed and derived the first statistics, which is in your course, that is Maxwell-Boltzmann statistics. So I request all the students, for clear understanding of this Bose-Einstein statistics, we have to refer the Maxwell-Boltzmann statistics, because in your course there are three statistics, and I should say that all the three statistics are important, and fortunately all these three statistics are interrelated. अर्थात अगर आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन बोल्ट्जमैन को अच्छे से समझ गए तो यू कैन वेरी इजीली डिराइव विदाउट एनी प्रॉब्लम दिस बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स. सिमिलरली अगर आपने बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से समझ गए तो आपको जो थर्ड स्टैटिस्टिक्स है, फर्मी डिरेक स्टैटिस्टिक्स, उसको भी आसानी से आप समझ सकते हैं, बिकॉज there are some common strategies. I will explain. There is some common strategies. जब आप किसी भी स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करेंगे तो कुछ कॉमन स्टैटिस्टिक्स आपको करना पड़ेगा, और वो एक बार ही आपको समझना है. जैसा वी हैव टू अप्लाई फर्स्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल, बिकॉज द कंडीशंस आर डिफरेंट. कुछ केस में ऐसा हो सकता है, इन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में हो सकता है पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल. हो सकता है आपके बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में होगा पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल. देन देयर मस्ट बी सम रेस्ट्रिक्शंस, सो कंडीशन में बी डिफरेंट. देन सेकेंडली, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड पार्टिकल्स, आप एवोगाड्रो नंबर जानते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.023 into 10^23. So we have to apply, because when we apply some factorial, इतने बड़े संख्या को हम कैसे करेंगे? तो there is a rules, approximation, that is called the Stirling approximation. तो तीनों स्टैटिस्टिक्स में आपको पहले कंडीशन को लगाना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा. दूसरा आपको अप्लाई करना है स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन, एंड थर्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज आर ऑल मैथमेटिकल कंसेप्ट, that is called the Lagrange's method of undetermined multiplier. और फिर आपने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे और यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन. ओके, अब मैं वाई, ऑल्दो यू आर अ स्टूडेंट ऑफ M.Sc सेकेंड सेमेस्टर, बट यू शुड नो द इंपॉर्टेंस ऑफ बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स. आपको मालूम होना चाहिए कि वाई वी आर एक्साइटेड about that Bose-Einstein statistics. And as usual, when I start any topic, when I talk any topic, I always discuss about the books referred, क्योंकि बिना बुक्स के आप कैसे उसको डिराइव करेंगे.
एंड आई ऑलवेज रिफर्ड लार्ज नंबर ऑफ गुड फिजिकल केमिस्ट्री बुक्स, पर हर बुक्स में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी स्टैटिस्टिक्स तो मिल जाता है, लेकिन बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स मिलना कई बार डिफिकल्ट होता है. बट आई विल शो यू some of the very simple books, and one book I always referred for the Indian writer, that is called the Statistical Thermodynamics by M.Sc. Gupta. You will get 3 statistics. But if you see the Atkins or even G.M. Barrow, you will get only that Maxwell-Boltzmann statistics. But you know that there is a very good book, Mercury, जिसको कि physical chemistry का भी book है. And another is separate book is the Statistical Mechanics by Mercury. So I have referred that book also. My derivation is based on that book. And third book is Statistical Thermodynamics, revised printing by Tan and Leinhard. And all these books are available in the internet also. That means आपको लाइब्रेरी में भी मिल सकता है, इंटरनेट से भी देख सकते. अब जो मैं आपको बता रहा था कि why this Bose-Einstein statistic is very important. कोई बता सकता है? Anybody? घुमाइए. Have you heard about the national mission of quantum theory? National mission of quantum theory? No. Very recently, because that Bose-Einstein statistic was discovered in the year of 1924. तो 2024 में कितना साल हो गया? 100 years. And we also celebrated 100 years of Bose-Einstein theory, and in this department we also organized 2 days seminar on this Bose long back. तो भारत सरकार ने 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च ए मिशन, so you can understand the importance of that Bose-Einstein, that is called the National Mission of Quantum Theory. National Quantum Mission. Why? Because you all aware of आज की तारीख में we are talking about the artificial intelligence, we are talking about the quantum computing, we are concerned about the communications, defense and other things. So government of India ने इसको एक start किया. So there is one important. Second important is that you all know about the another very important thing, that is called the Higgs boson. आपने नाम सुना होगा. Although Professor Satyendranath Bose was not awarded Nobel Prize, but on the basis of his theory, many scientists, जैसे पीटर हिग्स जिसको हम लोग हिग्स बोसॉन बोलते हैं, बोसन पार्टिकल, फिर एक the experimental verification of that Bose-Einstein condensation, बहुत सारे important चीज होता है. And then one of the important is the examination point of view. There may be different important questions. The application of Bose-Einstein statistics, superconductivity, then liquid helium, Bose-Einstein condensation, Planck's black body radiation. मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ठीक है आप तो डेरिवेशन समझ जाएंगे, लेकिन you must know that what is the importance of that. Whole statistics is important, statistical thermodynamics, but Bose-Einstein statistics is very, very important because the Indian scientists developed this theory on the basis of course, Max Planck black body radiation. और अगर आप लिटरेचर में देखेंगे या वेबसाइट में देखेंगे या गूगल में देखेंगे, मतलब उस जमाने में तो कुछ नहीं था. एंड दैट लेटर इज वेरी वेरी कॉमन दैट ड्यूरिंग व्हेन ही जस्ट स्टडीड दिस statistical method for photons, light particles, immediately he wrote a letter to Albert Einstein. सोचिए, and that letter is available everywhere. उनको जानते भी नहीं थे. And then immediately Einstein was excited to see his letter, and then he published that paper in of course German language, and then of course रेस्ट इज हिस्ट्री. बाद में दोनों ने मिलके उन्हीं के थ्योरी को लगा के अल्बर्ट आइंस्टाइन, एंड इसलिए इसको बोला जाता है बोस आइंस्टाइन थ्योरी. बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स भी बोलेंगे, एंड देन विल सी द एप्लीकेशन, दैट इज डिफरेंट थिंग. मैं डेरिवेशन में आऊंगा.
and it is useful for any photons to atoms and helium-4, because you know that liquid helium is very important and other things. And this is the first paper. जैसा भी जब भी मैं कोई आपको लेक्चर देता हूँ तो मैं ऑलवेज दिखाता हूँ कि कहाँ से ये फर्स्ट पेपर that is published in 1924, and I will derive that formula. So Bose and Albert Einstein paper, and जब इसका 100 years हुआ, they celebrated like that. And for preparing these small video lectures, I have referred large number of research papers, large number of books, large number of internet materials, Google search. And fortunately, there is a center, you know, that in Kolkata, that is called the National Center for S.N. Bose National Center for Basic Sciences. And they have published a series of articles, and that is the photographs of that institute. And वहाँ से मैं कुछ photographs आपको लिया हूँ, and I have given the source also. And I have not shown this original letters he has written to the Albert Einstein in the 4th June. मतलब ये तो याद भी है, I have ventured to write a letter, although I am not your direct student, but तो और ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का उनके रिप्लाई भी है. तो ये सब चीज as the world looks for quantum solution, Bose statistics 100 years. So now we can understand these things, though it is not important for your examination, but you must know that why we are studying the Bose-Einstein statistics. It has got tremendous application, just all the area of physics, all the area of quantum mission, everywhere. But basically, if you just refer that Maxwell-Boltzmann statistics, where the particles are distinguishable, but that can be derived with the help of classical mechanics, because these particles are not blindly follows the quantum mechanics. But here, the particles are indistinguishable, of course identical, but non-interacting, and they follows the quantum mechanics. And there is a separate type of spin, symmetric spin, asymmetric spin. Symmetric spin होता है, और आप लोग जानते हैं integer 0, 1, 2, 3 like that. An example of boson, हम लोग उसको बोसॉन बोलते हैं पार्टिकल को, because that was discovered by boson. जो फार्मी डायरेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, फार्मियॉन्स like that. उसको बोल्जॉन भी बोलते हैं. And it explains the black body radiations, and there is no restriction. मैं अभी इसको समझाऊंगा बहुत simply. And it explains the Bose-Einstein condensation. This is very, very important. And it provides the theoretical basis of the superfluidity and liquid helium. क्योंकि क्या होगा कि sometimes that is for Maxwell-Boltzmann is for high temperature and low density. तो अगर आप इसको टेम्परेचर को बहुत लो कर देंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -273, so it will form liquid. So that is called the Bose-Einstein का. मैं उसमें आज नहीं समझाऊंगा आपको. So now, as you know that whenever I start any topic, the student must know the final equation of the Bose-Einstein statistics. And sometimes if you see your examination paper or in competitive examination, sometimes there is a multiple choice question, because the final equation, that is number of particles with all these things, occupancy number sometimes it is called. Now if you see very carefully, that the final equation is, or sometimes I can write like that also, that means n so gi divided by exponential alpha, exponential beta, ei is the energy state, -1. Now if it is Maxwell-Boltzmann statistics अगर होता तो exactly same equation, there is no -1 or +1. तो कभी आप इसको मत भूलिए. तो कभी कभी परीक्षा में आता है ना, कंपेयर दी बोस-आइंस्टाइन, मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन एंड फर्मी-डिराक. तो आप अगर एक इक्वेशन को याद रखेंगे, इफ इट इज ए मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन, मैं भी समझाऊंगा कि हाउ
बोस आइंस्टाइन, ये फर्मी डायरेक्ट कन्वर्टेड टू द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, तो यहाँ पे कोई माइनस, बाकी सेम। इफ इट इज ए फर्मी डायरेक्ट, यहाँ माइनस की जगह में क्या हो जाएगा, +1, +1। एंड नाउ यू विल आस्क सर व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज बीटा, यू ऑल नो, इसका भी डेरिवेशन है। मैं अभी एक दिन में 1 घंटे में पूरा डिटेल्स नहीं जाऊंगा। सो दैट बीटा इज इक्वल टू 1 बाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टी, एंड अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई के वी बाई टी। दैट मीन्स अगर आप मेरे को इसको एक साथ लिखना होगा तो आई कैन राइट लाइक दैट, ई आई माइनस, where is the pen? Yes. So I can write like that, Ni, just for the student purpose. This is a statistical weight factor or the degree of disease, Gi, exponential. You can also write alpha plus beta, Ei -1. There is no problem. Now, if you just substitute the value of alpha and beta, so that can be written as Ni, Gi, exponential. You can write, because it is Ei minus mu. Mu is the chemical potential divided by is the Boltzmann constant by T. अभी हम जब डिटेल्स में जाएंगे, then it -1 like that. So this is the final equation, occupancy number. ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं इसको डिराइव करूंगा, I will derive it. And I have written another formula here that I'll explain you. That is the, as I already told you, the derivation of any statistics consists of 5 steps. How many steps? 5 steps. First steps, as per the condition, distinguishable, non-distinguishable, restriction or no restriction, following Pauli-exclusion principle or not, I have to first distribute the particles. Okay. Second, I have to apply some constraints, because there are a large number of particles, N1 plus N2. Here, like there are 60 students and 110 benches, 110 boxes, chair. कौन कहाँ बैठेगा? नहीं, ये स्टूडेंट यहाँ बैठेगा, ये स्टूडेंट यहाँ बैठेगा, ये स्टूडेंट यहाँ बैठेगा. So that is a distribution. Then I assume that, तो second क्या हो गया? Constraint. There are 2 constraints. Number 1, total number of molecules or particles, N1 plus N2 plus N3 plus N3, summation of Ni is a constant. Okay? You are having certain energy because there are large number of particles, उसका सबका energy है, E1, E2, E3. तो second constraint, इसलिए मैं इसको constant बोल रहा हूँ, assumption that particles with energy is also a constant. तो second step क्या हो गया? आपने constant को लिख दिया. Third steps, because there are large number of particles, so I have to apply Stirling approximation. ये किसका कौन सा step हो गया? Third हो गया. Fourth step, because there are so many factors, functions, so I have to apply some mathematics, that is called the Lagrange's method of undetermined multiplier. Last step, I have to calculate the maximum probability, and finally, so there are 5 steps. अब मैं बहुत सिंपल में आपको समझाना चाहूंगा. System descriptions. So consider a system, large number of particles are identical, indistinguishable. Basic difference. फिर से मैं समझा रहा हूँ. Maxwell Boltzmann, red, blue, green, black. Here all are suppose red or all are green. I cannot distinguish. So total energy is E1, E2, E3, and degree of degeneracy you all know, because Professor Shams Parvez has already discussed about the quantum mechanics. You know, different energy levels having different states. एक ही एनर्जी लेवल है E1, E2, E3, E4, उसमें 4 क्वांटम स्टेट है, G1, G2, G3, G4 like that. मैं भी समझाऊँ. So that is called the, sometimes it is called the degree of degeneracy, sometimes it is called the statistical weight factors, and number of particles occupying that energy level.
अब हाउ मेनी डिफरेंट वेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर नहीं समझ में आएगा फिर मैं आपको समझाने की इसको कोशिश करूंगा हिंदी में। देयरफॉर आई एम यूजिंग हिंदी, समटाइम्स यू वोंट अंडरस्टैंड द साइंटिफिक लैंग्वेज। नाउ जस्ट कंपेयर, देयर आर वन एनर्जी स्टेट, ओनली वन एनर्जी लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट विद एग्जाम्पल, आपको समझाने के लिए। क्योंकि सबसे पहले अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इस पार्टिकल को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वही आपका मेन फॉर्मूला होगा, फिर तो आप आगे जाएंगे। सपोज देयर आर 3 पार्टिकल्स, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, बस समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। देयर आर 3 पार्टिकल्स एंड नो all particles are indistinguishable, so therefore red, and one energy levels having 4 states, G1, G3, G4. I ask you, just you distribute it, and there is no restriction. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में रेस्ट्रिक्शन है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर रेस्ट्रिक्शन होता नहीं, नो 2 पार्टिकल्स एक बॉक्स में 2 से ज्यादा नहीं रह सकता है। तो मतलब ये मैं जस्ट समझाने के लिए आपको कर रहा हूं। So suppose there are 3 particles, so in first case maybe 2, second case 1, yeah 0, 0. So there are 4 type of conditions. That is also possible. Here is 2, here is 1, or 1, 2, 3, single. So there is no restriction. Okay. Now I have to calculate that in place of G1, G2, G3, G4. Suppose that is generally I must write GI. So minimum number of GI, because there are 3 box, 1 wall, 2 wall, 3 wall. तीन कमरा है, 4 कमरा है, तो हमारे पास कितना वॉल है? 3 ही वॉल है ना, 3 वॉल है। So number of separators not 4, because there are 4 rooms, but उसको कौन सेपरेट कर रहा है? 3 दीवार उसको सेपरेट कर रहा है। सो नंबर ऑफ सेपरेबल कितना होगा? नंबर ऑफ बॉक्सेस -1, नंबर ऑफ बॉक्सेस इज 4, बट वॉल इज 3, सो आई शुड राइट आवर, हियर इज G, स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर। सो व्हाट इज दैट? G -1, and total number of particles, that is also object, that is also object. So what is that? That is Ni. Bear in mind here most of the books number of particles को small ni से शो करता है, लेकिन मैं चूंकि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में कैपिटल N से किया हूं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वो आपकी मर्जी है। आप स्मॉल ni लिखिए, कैपिटल Ni लिखिए, इप्सिलॉन को एनर्जी को कैपिटल E लिखिए या एप्सिलॉन लिखिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितना हुआ? Ni so I can write Ni plus Gi -1, ये हुआ हमारा। बट बिकॉज all the particles are indistinguishable, so therefore I cannot say, or anybody cannot say that यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे 3 है, यहां 4, मैं नहीं कर सकता। तो in order to get any confusion, it is better to divide total number of boxes as well as total number of that states. So therefore I just divided by Ni and Gi -1. But as you know that if you know the statistics, there is a question of the permutation and the combination. Permutation and combination. उसके लिए क्या यूज करना पड़ता है? फैक्टोरियल। जैसे हमारे पास 2 बॉक्स है, एक ये है, एक ये है, हम लोग कैसे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं? तो a प्लस b निकालता है कि नहीं, डिवाइडेड बाई a प्लस b फैक्टोरियल, a फैक्टोरियल एंड b फैक्टोरियल। लाइक दैट इज अ वेरी कॉमन फॉर्मूला। सो देयरफॉर our first condition is that how that particles are distributed among the energy levels with some quantum state is equal to Ni plus Gi factorial and Ni factorial and Gi factorial. Once you understand that distribution, so your first part is over.
आपका पहला पार्ट ओवर हो गया। दूसरा पार्ट क्या बोला था मैंने, बताओ फिर दिखाओ इनको। व्हाट इज द सेकंड? कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्टेंट। चलिए अभी मैं डेरिवेशन में आऊंगा, पहले मैं कांस्टेंट दिखा दूं। अब आप बोलेंगे सर बिकॉज यू हैव जस्ट रिटन n प्लस जी आई 1 फैक्टोरियल एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल, व्हाई यू हैव गिवन द प्रोडक्ट? बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स, so therefore total number of microstates, so I have just given this sign, that means it is a product of all the systems. Now I am coming to the constant. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था that the system may be n1 n2 n3 n4 n0, लिखे ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। so that means again I can write like that, so n1 plus n2 like that, उतने का तो हम कर नहीं सकेंगे। so what I do, so summation of ni is fixed, ये देखिए कैपिटल N हो गया। and you know that, if you know, because I have to determine the maximum minimum zero, so you know that अगर इसको हम डेरिवेट उसकी अगर हम dni करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, वो जीरो हो जाएगा ना, फिक्स हो जाएगा। अब n1 molecules having energy E1, having energy N2, so same thing हम you can write like this, summation of N1 E1 minus E0. Although in some books they don't write E1 or E2, the difference between 0 point energy like that. Then plus N2, difference between E2 minus E0 like that. Then E3 like that, EI like that. So again there is no compulsion कि आपको E0 से लिखना पड़ेगा। जो स्टूडेंट अगर नहीं समझ में आ रहा है जिनको, तो सिंपल आप क्या लिख देंगे, समेशन ऑफ NI EI, दैट इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। इसका भी अगर आप फिर इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन फॉर्म करेंगे डी ऑफ n या इज इक्वल टू 0। तो दो कांस्टेंट आपको समझ में आया। इन सम बुक्स दैट स्मॉल, अब देखिए यहाँ पे मैंने कहीं इप्सिलॉन लिख रहा हूँ, इसमें भी आप एनर्जी को E लिखिए, एनर्जी को इप्सिलॉन लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन सम बुक्स, सम गुड रिसर्च पेपर्स दैट NIEI कभी कभी U भी लिखा हुआ है। मैं सबसे सिंपलेस्ट डेरिवेशन करने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। सेकेंड पार्ट इज ओवर, सेकेंड पार्ट इज ओवर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंक्लूजन जो है मैक्सवेल में भी होगा, बोस आइंस्टाइन में भी होगा, फार्मी में भी होगा। ये कॉमन पार्ट में जा रहा हूं। थर्ड पार्ट डेरिवेशन छोटा सा है। नाउ बिकॉज अगेन इट इज ऑल्सो कॉमन, ये शायद आप लोग जानते होंगे। स्टिलिंग, अभी इसके मैथमेटिक्स में मत जाइए, देयर इज अ डेरिवेशन, स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन इज अ मैथमेटिक्स, Lagrange's method of undetermined is mathematics, and if you want to learn about the Stirling approximation, and I will suggest you just see that any mathematics book or even physical chemistry by Gordon M. Barrow, G.M. Barrow. G.M. Barrow अपेंडिक्स में देखिए लास्ट में। बट आप सिंपल समझिए कि सपोज देयर आर कोई फैक्टोरियल है n large number, so n natural log of n minus n. You any doubt? So x is equal to like that. Second part is also over. Now very important thing, because we have to calculate most probable distribution, maximum, because large number of molecules, उसमें कितना मैक्सिमम जा रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे फंक्शंस है उसको जीरो करना पड़ेगा मैक्सिमम निकालने के लिए, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंड, सपोज f is a function of x, y and z, so how do I write df is equal to dx upon df upon dx, df dy dy. There may be many, and there are two constants. One constant is conservation of total number of particles, another constant is conservation of total number of energy. दो कांस्टेंट है। नाउ देयर इज ए साइंटिस्ट
mathematician, Francis scientist. His name is Joseph Louis Lagrange. आपको बहुत डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है. तो चौथा क्या मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन ऑफ लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर. मतलब हमको कोई एक अनडिटरमाइंड लैग्रेंजेस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन subject to a constraint by introducing some that cannot be determined, maybe alpha, maybe beta, maybe gamma. और यहां पे कितने कांस्टेंट है? वेरी गुड. तो कितने मल्टीप्लायर लगेंगे? तो दैट इज कॉल्ड Lagrange's method of undetermined multiplier. Okay, and you all know that there is a formula. आप बोलेंगे सर एंट्रोपी कहां से आ गया? मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं. जब मैं डेरिवेशन करूंगा आप ये जानते हो, एस इज इक्वल टू के बोल्टजमैन को नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू आपने पढ़े होंगे. प्रोबेबिलिटी एस इज इक्वल टू natural log. So I have to calculate that probability, natural log of W, using that Lagrange's method of undetermined multiplier. Okay. Just you. Now two research scholars are here. One is Prince Kumar Soni. Please come forward, come forward, come forward. He is helping me in technical, and another is that Abhishek Katandri. Please come this side. It is a one type of interactions. So they are the very brilliant research scholars of our department. So they are helping me. तो आपके टीचिंग में भी ये लोग अपना मदद कर रहे हैं. ओके, बैठिए प्लीज. थैंक यू. सो आगे, अब फिर आगे नहीं बढ़ रहा है. You just see. Yes. Now see, इसके बाद मैं डेरिवेशन करूंगा. It will take only 5 to 10 minutes. That's all. Don't. I think I am using very simple language so that you can. अगर एक को आपने समझ गए तो आपको बिल्कुल आप घर में जाकर तीनों को डेराइव करिए. आप देखेंगे it will be very easy. So now there are two constants. So there is first constant is this summation of I n I, and second constant is e I minus e 0, or you can simply write e I. And probability is W. So natural of W minus अल्फा. इसमें भी आप कंफ्यूज मत होइए. मैं जो आपको डेरिवेशन कर रहा हूं दैट इज द सिंपलेस्ट डेरिवेशन. आई मस्ट टेल यू, डोंट कंफ्यूज. बुक में प्लस है माइनस है, नथिंग. जस्ट नेचुरल ऑफ डब्ल्यू माइनस अल्फा. दिस इज कॉल्ड अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, एंड दैट इज, एंड एज यू नो दैट most of the books they are not worried about that ei minus e0. Better you can directly write the ei. Okay, ei, or even in some books I just written eu like that. So अब चार कांस्टेंट मैंने आपको समझा दिया. चार. अब लास्ट प्रोसेस में मैं आऊंगा. नाउ आई विल डिराइव दैट लास्ट इक्वेशन. आई थिंक इट इज क्लियर और नॉट? एकदम क्लियर हो गया. अब मैं डेरिवेशन में आ रहा हूं. Okay, let me start with the first cancel. So derivation. So first our probability we have already determined. W is equal to Ni plus Gi minus 1 factorial Ni factorial Gi minus 1 factorial. Okay. So taking logarithm, because when you see that our formula natural log of W minus alpha summation of Ni minus beta summation of Ni and Ei, that is our Lagrange's method of undetermined multiplier. हर का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि why you are taking the log.
because I have to substitute these values. So therefore, I am taking log. So natural log of W probability is equal to, very simple, Ni plus Gi minus 1 factorial minus, because it is natural log of Ni factorial minus natural log of Gi. If you don't understand, you can interrupt me anytime. No confusion? Now, as because that Gi higher value is compressed to 1, like that, you know that x minus 1 sometimes, the value of x is greater than 1, that x minus 1 can be written as x. So कुछ बुक्स में आपका पूरे डेरिवेशन करते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल डेरिवेशन समझा रहा हूं कि आई कैन modify it like that, because that g minus 1 can be written as gi, because the value of gi is higher than 1. n तो बहुत ज्यादा है, n का वैल्यू तो बहुत ज्यादा है. सो नेचुरल लॉग ऑफ, इजी हो गया, देखिए, एन आई प्लस जी आई फैक्टोरियल माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एन आई फैक्टोरियल माइनस natural log of gi factorial. Apply, स्पेलिंग मत गलती करिए, स्टिरलिंग, STIR, स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन. Natural log of n factorial is equal to n natural log of n minus n. Very easy. So I can write like that, natural log of W Ni plus Gi natural log of Ni plus Gi minus Ni plus Gi. First, second, Ni natural log of Ni minus n, but here is minus, so it is plus Ni. Is it clear? Then minus Gi natural log of Gi plus Gi. Why? Because it is minus. So I should use the yellow color again. See very carefully that I can write like that, Ni plus Gi. I can write, and here is also minus Ni plus Gi. So that can be very good. So I am getting finally natural log of W is equal to, then a little bit mathematics is required, Gi natural log of Ni plus Gi minus Ni natural log of Ni minus Gi natural log of Gi. Is it clear or not? Yes. So I have to, now one thing is, you know that as I told you, I just use the another color. As I told you, this color I think is better. As I told you that when we apply the Lagrange's method of undetermined multiplier, so, and the maxima or minima can be determined, that must be 0. So if I take the derivative of this thing, that means
if I take that d by dni, natural log of w minus alpha summation of ni minus beta, don't get confused, minus और आगे लिख दिया ni लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, it must be equal to 0. So I can write one thing, थोड़ा मूव करना पड़ेगा आप, very well, thank you. So you know that if I just, or you can talk with the derivative of these things. So मैं लाल कलर में करूँ या थोड़ा और ऊपर चले जाता हूँ, जब ये सब लगेगा. So I can write in the red color because what I take this Lagrange's method को हमने, अच्छा वो थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा, अब नीचे नहीं आएगा, मूव, वो देखिए वो जो ऊपर दिख रहा है मैं उसको और नीचे कर दे रहा हूँ. मैं शुड आई राइट लाइक दैट डी, ज्यादा इधर उधर हो जाएगा तो गड़बड़ है. सो ओके, एनीवे व्हाट आई कैन राइट लाइक, हाँ नहीं मैं ओके 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 राइट, रेड कलर, व्हाट आई राइट डी, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू, इधर से लिखूं अदरवाइज बिग इक्वेशन, राइट. सो यहां से लिखूं मैं डी डी एन आई नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू माइनस, अब इसका डेरिवेटिव हो गया ना, ये डी एन आई कैसे, ओनली अल्फा माइनस फिर एन आई कैसे बीटा ई आई इज इक्वल टू 0 भी आप लिख सकते हैं. ये हमारा नाउ, एंड वी हैव ऑलरेडी, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स, वेरी वेरी सिंपल डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, very simple, and you know all these things. First, why you have taken log, you can understand. Now our Lagrange's method of undetermined multiplier, there is a formula d by dni natural log w minus alpha minus beta ei equal to 0. I am getting the maximum possibilities, maximum probability, most probable distribution, most probable distribution. Now because I am using d by dni, it is a derivative, so but here, so I have to differentiate that equation. I have to differentiate that equation. That is, I can write like that, natural log of w d by dni. You can simply write like that. ऐसा करके आप लिखा. अभी मैं आपको समझाता हूँ डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे. ni plus gi dot 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 everything. Now before differentiation or derivative I can take with respect to dni, I can write like the dni dw d, of course. Again आपको और easy कर दे रहा हूँ, because g is a statistical weight factor, number of states, quantum state. So if I take the d by dni of gi natural log of g, it must be 0. Move, last stage आ गया, बस only 2 minutes or 5 minutes. Now again I am just showing the simple differentiation method. How many students are mathematics background? Raise their hands. Okay, 2 or 3. Now there are two products. Suppose this is u and this is v. आप लोग हंस रहे because it is very simple. First function into differentiation of second plus second function into differentiation of first. Is it clear? Yes. I can change the color because now you got the point, and I think you will all enjoy this Bose Einstein statistic, because
अब आपको कठिन तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको बहुत कठिन लग रहा है इसको, और घर में जाके आप फार्मी डायरी करिए, और फिर मैं अभी तो मैं छुट्टी में रहूँगा, उसके बाद आके फिर फार्मी डायरी भी करा दूंगा या जो भी आपको टीचर कराएंगे, लेकिन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को भी घर में जाके करिए। तो नाउ लास्ट स्टेप, सो मैं ऐसा लिख दूं, फर्स्ट फंक्शन इज एन आई प्लस जी आई, उतना पूरा नहीं लिखूंगा, समय नहीं है, डी बाई डी एन आई ऑफ natural log of ni plus here, you know, d by dx natural log of x is equal to 1 by x. Any doubt? So ni divided by ni is gi. That means I can remove this thing, मैं I can easy कर दे रहा हूँ, तो कैंसिल हो गया, ni gi, कोई मतलब नहीं इसको. Then plus second function natural log of ni plus gi and d by dni, तो ये dni इसको प्लस 1 हुआ ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन, दैट इज. फिर सेम थिंग हम उसमें जाएंगे, माइनस है, सेम थिंग मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन इज ni d by dni ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ni, dni आप करके लिख सकते हैं. फिर वही हुआ, अगेन आई जस्ट इरेज इट, राइट, प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, सो यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ ni, उसमें यहाँ पे प्लस 1 है ना, फर्स्ट फंक्शन जो प्लस, फिर यहाँ पे वही हो गया, दिस कैंसिल, ni dni, ये माइनस है, यहाँ पे -1. सो व्हाट आई कैन राइट लाइक दैट, पूरे को आप या तो पूरे को करके आप dni करके लिख दीजिए. सो दैट पार्ट इज ऑल्सो गॉन, सो this 1 -1 cancelled, so I'll getting that simple ni gi, ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में लिख दीजिए, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ni पूरे को dni. सो व्हाट आई कैन राइट, फिर आगे बढ़ाते हैं इसको, लास्ट स्टेप आ गया. Yes. So what I can write? Again, red color. D natural log of, उधर से मैं इधर ले आया dni, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल, वो इधर का +1 उधर का -1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ni log of x minus log of b, a by b we can write natural log of ni. So लास्ट स्टेप आ गया है, अगेन येलो, छोटा कर देता हूँ थोड़ा, w इज इक्वल टू, आई कैन राइट नेचुरल लॉग ऑफ ni प्लस gi डिवाइडेड बाई ni. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, एनीबडी? I have to substitute the values of d ni natural log w in our Lagrange's method of undetermined multiplier. मैं थोड़ा एक बार दिखा देता हूं आपको, Lagrange's मेथड में हमारा क्या था, ब्रैकेट, सॉरी वो दिख रहा है आपको, दिस d by d natural log minus w minus beta ei is equal to 0. So I have to, this
in here. So in place I can write natural log of Ni plus Gi divided by Ni minus alpha minus beta Ei is equal to 0. So natural log of Ni plus Gi, आपको लिखने की जरूरत नहीं, अभी हम इसको उसमें कर देंगे, इधर ले जाइए अल्फा, इसमें कोई माइनस प्लस का कंफ्यूज मत होइए, बीटा Ei, और यू नो दैट इसको अगर हम लॉग को हटाएंगे एक्सपोनेंशियल, सो कोई माइनस प्लस किताब में ऐसा है माइनस प्लस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. Right, so Ni plus Gi Ni is equal to, दो तरह से लिखा जा सकता है, एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्सपोनेंशियल बीटा Ei, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, लिख सकते हैं कि नहीं, और Ei minus 0, everything is possible like that. Absolutely, it is a change in delta E because there is a transitions like that. But what I can write like that? I can write like that 1 plus. Can I write like that? Any doubt? इतना easy है, देखिए. और तो डिफ्रेंसिएशन में थोड़ा देख लीजिएगा, फर्स्ट फंक्शन माइनस कैसे dn कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल अल्फा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं बीटा Ei. अगेन मैं जस्ट जनरल स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स स्टूडेंट तो डायरेक्ट एक बार में इतने सारे करने की जरूरत नहीं, यू कैन दे कैन डायरेक्टली राइट दैट, बट माय ऑब्जेक्टिव इज दैट स्टूडेंट मस्ट अंडरस्टैंड, एंड वंस अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बाकी चूंकि एक जैसा है तो आप ही के लिए आसानी है, इसलिए मैं इतना स्लो कर रहा हूँ. Gi Ni इज इक्वल टू, कोई प्लस माइनस में कोई कंफ्यूजन नहीं कि किस बुक में माइनस है और वॉट एवर इट इज, आई एम टेकिंग ओरिजिनल. बट एज यू नो दैट इफ आई सी माई फर्स्ट इक्वेशन बिफोर when I start the lecture, so formula is that Ni, occupancy number. So therefore, if I just reverse that equation, reciprocal. Again, red color. Because last, any? Oh, sorry, very good, very good, very good, very good. Very good. So, red color. Ni. In some books it is written so that जब आप किताब में जाके पढ़ेंगे तो स्मॉल लेने, कोई कंफ्यूजन नहीं. Here I am just a capital Ni. So Gi exponential alpha plus beta Ei minus 1. That is our final equation of Bose-Einstein statistics. It is not the end because there are so many applications. Say for example, if you just beta equal to 1 by Boltzmann constant and T, alpha minus chemical potential
divided by, although for photons, because he actually derived equation for photons, and for photons the chemical potential value is equal to 0. So generally they will get this thing. So if I just substitute this value, so I'll get, again, just to move, or even up to this is also all right, there is no problem. But if you just want to, so now I'm just showing GI exponential EI minus chemical potential divided by KBT minus 1. And this is the final formula, or even for photon case there is no question of chemical potential, so just exponential alpha beta by Ki, you can write that. So let me just summarize the whole story, that my suggestion is that first you referred my first lecture related to Maxwell-Boltzmann statistics, then you proceed for the Bose-Einstein, then you can compare all the three systems. And in next time, I will not derive this Fermi-Dirac because it is up to you. You can very easily derive this Fermi-Dirac statistics. But only difference is that there will be a plus here. I will reason for that, because the distribution will be different. And if it is Maxwell-Boltzmann distribution, because the conversion is possible, high temperature is that both Fermi-Dirac and Maxwell-Boltzmann and Bose-Einstein may be converted into that Maxwell-Boltzmann. But if you go through the literature, and I have not seen your final prospectus, your syllabus, if it is available that you have to derive the Planck's black body of the radiation from that equation, तो आपको अलग डेरिवेशन करना पड़ेगा. और you please check your prospectus, अगर आपको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन है कोर्स में, द एप्लीकेशन ऑफ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, तो आपको फिर इससे आगे और डेरिवेशन करना पड़ेगा. सो मैं अब पहले में चले जाता हूँ. दिस ना पीसी, एक बार फिर से चेक कर लीजिए. द फॉर्मूला इज NI GI या अल्फा प्लस बीटा, और इवन यू कैन राइट E अल्फा एक्सपोनेंशियल बीटा, देयर इज नो प्रॉब्लम. So I just, so my first equation, because please देखिए पहले मैं आ जा रहा हूँ फिर से. Yes. So you can write E alpha plus beta EI also. If epsilon or capital E, then this is the formula, the chemical potential. And but of course derive it because Satyendranath Bose applied for photons. And of course, if you decrease the temperature minus 273, 0 degrees centigrade, then of course that gas is condensed. So that is the difference between the bosons and Higgs boson, because in Higgs boson that particles acquire some massless particles. And so thank you very much for attending this class, and my next lecture will be on Fermi-Dirac statistics.